AR Antole versus RS Naik. This case is very much famous, which prepared the foundation for the security petitions before the Honorable Supreme Court. There is no constitutional provision or statutory provision for the security petition. Security petition means Supreme Court can review its own judgment after filing the review petition under Article 137 of the Constitution. So this case is famous to build the foundation for the security petition. This case is famous to build the foundation that Supreme Court can correct its own mistakes in previous judgments. So background of the case is A.R. Antole. He was the Chief Minister of Maharashtra. R.S. Naik, he was the political opponent of the A.R. Antole and he belonged to a particular party. Allegations before the A.R. Antole was that he misused his office, he took illegal donations, extortion, and he used his office for the corrupt practices. Once the RS Naik, he found that A.R. Antole, he was involved into the corrupt practices. He is misusing his office of the chief minister. Then he approached governor for sanction to prosecute A.R. Antole, but governor denied. Then RS Naik filed a private complaint before Metropolitan Magistrate. In this case too, Metropolitan Magistrate refused to take cognizance as the sanction of the governor was needed to prosecute the A.R. Antole. He was a chief minister. So, against the order of the Metropolitan Magistrate, RS Naik filed a writ petition in Bombay High Court. Bombay High Court found the substance in the matter, means Bombay High Court found the substance in the matter filed before the Bombay High Court in through a medium of writ petition. So, because of the substance found by the High Court's pressure, A.R. Antole, he was forced to resign from the position of the Chief Minister. However, High Court decided that governor's sanction is needed to prosecute the Chief Minister. Apart from this, Bombay High Court also rejected the plea of the petitioner that the case should be tried by High Court itself. So, High Court this prayer was rejected by the High Court to transfer the case to self. After this writ petition, A.R. Antole resigned, but he remained member of Legislative Assembly. Because A.R. Antole, he was not the chief minister and he was but he was MLA. So governor sanctioned in five matters belonging to three subjects. Means there were for example there were 10 complaints against the chief minister. So out of those 10 complaints, governor sanctioned for few complaints. So in this case, there were a lot of matters before the governor to sanction. So governor sanctioned in five matters belonging to three subjects. Because of this, RS Naik filed a fresh complaint against AR Antole before a special judge along with more allegations. A special judge issued processes and overruled AR Antole's objection for jurisdiction in light of Section 7.2 of Criminal Law Amendment Act 1952. There should be a notification which three special judges of the area should take the cognizance of such matters. जब हम बात करते हैं कि a judge has issued the processes, इसका मतलब यह है कि now the criminal trial has begun. So लेकिन जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 था उसका सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, as per that subsection as per this section there should be a notification that which three of the special judges of the area should take cognizance of such matters, means matters related to the corruption of the political people. अब हुआ क्या कि जब ए आर अंतुले ने इसका ऑब्जेक्शन लिया तो स्टेट गवर्नमेंट ने इमीडिएटली मिस्टर आरबी सुली को एज अ स्पेशल जज अपॉइंट कर दिया. नाउ आरबी सुले साहब के सामने जब ये केस आया तो आरबी सुले साहब ने ए आर अंतुले को डिस्चार्ज कर दिया, मींस फ्री कर दिया. आर स्पेशल जज मिस्टर आरबी सुले ने क्या बोला दैट गवर्नर सैंक्शन इज नीडेड बिकॉज
MLA is a public servant. So against this discharge by Mr. R.B. Sule, who was the special judge, R.S. Naik filed a SLP under Article 136 of the Constitution of India. This was listed before two judges bench, and this two judges bench held that MLA is not a public servant. However, instead of remanding the case back to the special judge Mr. R.B. Sule, he Supreme Court took suo motu action and transferred the case to Bombay High Court for trial. So against this judgment in the SLP, A.R. Antule filed another SLP challenging the judgment of two judges bench. Sorry, it was not SLP, it was a writ petition. So the procedural twist were A.R. Antule challenged the decision of the Supreme Court in Supreme Court itself on the following grounds. पहला ग्राउंड ये था कि नॉट इट वाज नॉट परमिटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कि अगर कोई केस को ट्रायल में जाना है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इट शुड गो इन बिफोर अ स्पेशल जज not before the High Court. So this was the first ground to challenge the decision of the Supreme Court by the two judges. Second ground was that A.R. Antole has lost a statutory right to appeal to the High Court because in case if the A.R. Antole he loses the case before it, then A.R. Antole has the right to appeal before the High Court. अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली हाई कोर्ट को भेज दिया है तो उसकी एक अपील तो खराब होगी तो उस केस में क्या होगा कि नेक्स्ट अपील किधर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में सो his right to appeal is also snatched by the Supreme Court by the two judges. So this triggered a constitutional challenge. Now it was listed before a constitution bench in 1988. उस constitution bench के सामने जो issues थे they were like can Supreme Court direct a High Court judge to conduct a criminal trial? क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल सकती है कि आप क्रिमिनल ट्रायल को कंडक्ट करो जनरली क्रिमिनल ट्रायल्स जो है एक लोअर कोर्ट में कंडक्ट किए जाते हैं ताकि इन केस अगर अपील की जरूरत पड़ती है तो हाई कोर्ट में जाए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए सो वाज द अर्लियर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन विदाउट जुरिडिक्शन क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रीवियस डायरेक्शन दी थी दैट द ट्रायल शुड बी कंडक्टेड बाय द हाई कोर्ट वाज इट विदाउट द जुरिडिक्शन वर सुप्रीम कोर्ट हैविंग एनी पावर बाय द स्टैट्यूट to give such decisions. Third was, did it violate Article 21? Article 21 means nobody can be, uh, everybody has a right to, Article 21 is, if you want to take away the person or property of any person, it should be taken away by the procedure established by law. And that law should be just, fair and reasonable, which is given in Maneka Gandhi case. Fourth, can Supreme Court correct its own earlier mistake? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की गलतियां सुधार सकता है तो की होल्डिंग्स वर Supreme Court held its earlier direction was per incurium and without jurisdiction क्योंकि जब डिसीजन दिया था कि हाई कोर्ट विल ट्राई द क्रिमिनल मैटर तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई jurisdiction नहीं थी बाय द स्टैट्यूट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बाय एनी और बाय एनी स्टैट्यूट अब आप बोल सकते हैं कि आर्टिकल 142 इनहेरेंट पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास टू डू द कंप्लीट जस्टिस बट हाउएवर सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट this article should not be invoked in such matters. So there is no express provision. Second key holding of the Supreme Court was the trial must occur before the special judge as per the statute जो Criminal Law Amendment Act था 1952 का. तीसरी की होल्डिंग ये थी कि टेकिंग अवे अपीलेट फोरम वायलेटेड आर्टिकल 21. अगर मैं किसी अगर सुप्रीम कोर्ट किसी एक अपील का अधिकार किसी से छीन रही है तो इट वुड वायलेट द आर्टिकल 21 which ensures that right to fair trial. And the fourth holding was Supreme Court can correct its own mistake to prevent injustice. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 का पावर यूज किया है
तो इस केस को जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर डिसाइडिंग दिस केस, तो दो मेजर जजमेंट्स निकल कर आए थे। वन वाज द नरेश मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नरेश मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने, इसमें क्या हुआ था कि एक हाई कोर्ट का जजमेंट वाज चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 32 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जुडिशियल ऑर्डर्स आर नॉट द स्टेट एक्शंस अंडर आर्टिकल 32। पहला तो ये कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली एट पार। मतलब हाई कोर्ट का जजमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जस्ट बिकॉज इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट। आपको सुप्रीम कोर्ट में आना, आर्टिकल 136 में आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां कुछ प्रॉब्लम होगी तो इट मे कन्वर्ट इनटू सिविल और क्रिमिनल अपील एज पर द केस, बट यू कैन नॉट challenge the high court's order under article 32. Second case was mm thomas versus state of kerala. In this case, supreme court referred that the courts have inherent power to correct errors. तो कोर्ट हैव इनहेरेंट पावर टू करेक्ट एरर्स, यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 142 की। सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस केस वाज हाई कोर्ट जज डाइवर्स्टेड फॉर ट्रायल। हाई कोर्ट जज से वो ट्रायल छीन लिया गया, ट्रायल को रिस्टोर किया गया स्पेशल जज के सामने। प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी डन वर प्रिजर्व टू अवॉइड इनजस्टिस। जो भी प्रोसीडिंग्स हो चुकी थी हाई कोर्ट के अंदर, दे वर प्रिजर्व and foundation laid for future curative jurisdiction, which is a key phrase here, curative jurisdiction. It was finalized in Rupa Ashok Hurra case in 2002, but foundation यहाँ पे बन चुका था। तो significance of this case is that it was a rare case where Supreme Court admits and correct its own error. It strengthens Article 21 of the Constitution of India, which ensures right to fair trial, clarifies limits on Supreme Court's extraordinary powers under Article 142। भाई सुप्रीम कोर्ट कि ऐसा नहीं कि मन में जो आएगा वो करेगा। सुप्रीम कोर्ट्स पावर अंडर आर्टिकल 122 आर एक्सरसाइज्ड is exercised under rarest of rare case in order to do the complete justice, not to snatch away the right, not to snatch away of right of any person under which is guaranteed in the article under constitution, and it became a major precedent for judicial accountability. Final outcome for Anthole, सुप्रीम कोर्ट के सामने गया केस, बट सुप्रीम कोर्ट ने एंथोले को कन्विक्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि स्पेशल ट्रायल, स्पेशल जज के सामने ही ट्राई होगा केस उसका। लेकिन बाद में सब कुछ ट्रायल वायल हुआ और वो एयर एंथले जो है ही वाज नॉट कन्विक्टेड। केस रिमेंबर्ड मेनली फॉर प्रोसीजर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एयर एंथले वर्सेस आर एस नाइक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट विच laid the foundation for the curative petition.